unexpected cases because of this loneliness. Man needs society for his living, working and enjoying life. हमें क्या चाहिए? हमें सोसाइटी में रहने के लिए लोग चाहिए, उसके साथ साथ हम जहाँ पे हमें वर्क भी सोसाइटी के लिए ही करना है, अपने खुद के लिए भी, और सोसाइटी में जाके वर्क करना है. मीन्स सोसाइटी हियर इज मीनिंग मोर देन वन पीपल, एंड इवन वी नीड अ लाइफ टू एंजॉय इट. पैसा सिर्फ कमा लिया वो दैट इज नॉट सफिशिएंट. उस पैसे से करोगे क्या? You have so many dreams, you have so many achievements, you have to achieve those and you have to enjoy those with that money what you are earning. Then only your life will be, you think that your life will be an enjoyable and fruitful one. तो हर चीज के लिए हमने क्या देखा है? सोसाइटी इज डिपेंडेबल. जबकि हम बोलते हैं कि सोसाइटी, अरे सोसाइटी क्या करेगा? सोसाइटी हमें खिलाता है, सोसाइटी क्या हमें पिलाता है, क्यों हम सोसाइटी को माने? बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉट एवर यू थिंक ऑफ, सोसाइटी हमारा पार्ट एंड पार्सल बन गया. वी हैव टू गो विद द सोसाइटी. सोसाइटी हैज बिकम एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ह्यूमन लाइफ. तो क्या हमने देखा है कि हर चीज में सोसाइटी मैटर करता है. सो दैट इज द वे दैट we are becoming society is becoming an essential condition of our life, and human life and society हमेशा एक साथ चलता है. It goes always together. हम हमारे लाइफ को सोसाइटी के बिना सोच नहीं सकते, क्योंकि सपोज वट एवर आई एम, क्यों मुझे ये नाम मिला? बिकॉज सोसाइटी ने मुझे ये नाम दिया है. अगर सोसाइटी ही नहीं रहता, अगर दूसरे लोग ही नहीं रहते, तो कौन जानता कि मैं क्या हूँ एंड व्हाट आई हैव अचीव्ड, और हुएवर वी आर, कौन जानता? हमें एक्नॉलेज कौन करता है? द सोसाइटी इटसेल्फ. सो सोसाइटी हैज बिकम अ वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, एंड ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी ऑलवेज गोज टुगेदर. जब ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी एक साथ जाते हैं, तभी एक चीज और आ जाता है हमारे लाइफ में, दैट इज सोशल कंस्ट्रेंट्स. सो सोशल कंस्ट्रेंट का मतलब है रेस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रेंट्स मीन्स रेस्ट्रिक्शन, आपको बांध के रखता है. द फर्स्ट स्लाइड विच आई हैव शोन, दैट इज चेन्स. हम दूसरे तरीके से हम उसको जान सकते हैं. मीन्स दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस. आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट. No, ma'am, it's okay. Okay. Then comes social control. कंस्ट्रेंट जब आ जाता है हमारे लाइफ में, जब रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है, उसके साथ साथ सोशल कंट्रोल आ जाता है. सो आई एम कोटिंग ए टर्म बाय अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट E.A. Rose, who has written in his book Social Control. सोशल कंट्रोल में ही उन्होंने कंसेप्ट सोशल कंट्रोल का दिया है. सो वहां पे he has defined social control by saying that system of devices whereby society brings its membership into conformity with the accepted standards of behavior. So social control, it's very easy term, still I'm explaining it like it's a device. एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे कि सोसाइटी अपने मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, conformity means आप उसको मान के चलेंगे, that is conforming, means we are giving a confirmation that okay I'll do that and that is called conformity. So वो मान के चलना, क्या मान के चलना? यहाँ पे बेसिकली इट्स टॉकिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, कि हमें सोसाइटी में रहने के लिए हमारा क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए. मीन्स दैट इज कॉल्ड वी ऑल हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर व्हिच इज असाइन्ड बाय द सोसाइटी, और उस चीज को सही रखने के लिए सोशल कंट्रोल एक डिवाइस बन के हमें हेल्प करता है. नीड ऑफ सोशल कंट्रोल. सो the first need is to maintain the old order. हमारा जो पुराना order system है, means like if you talk of our religions में कुछ orders मानते हैं, कुछ family orders होते हैं, कुछ what you say like customs होते हैं, our cultures have some orders which we have to follow, our belief system, all these things. To maintain this thing, social control is required. Next is to regulate individual behavior. So individual behavior in the what is that
term itself, which has been explained by Rousseau, he has said that standard behavior होना चाहिए. With that, we can understand कि हमारा individual behavior control करने के लिए एक device होना चाहिए. Suppose talking of a modern instrument of social control, that is technology. अगर हम technology का help लेते हैं, that is in sociological terms it is surveillance society बोला जाता है, जहाँ पे कि मतलब with the help of technologies you can regulate individual behavior. हम individuals के behavior को एकदम मतलब control कर सकते हैं with technology. जैसे कि सीसीटीवी हर जगह पे लगा हुआ होता है, तो उसके लिए किसी और को वहां पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है. और खड़े रहने से क्या होता है, दूसरे को देख लेगा and you will have control in yourself. But this CCTV, where some might not be knowing that उस प्लेस में सीसीटीवी दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई जानता है then they will themselves control कि मैं यहाँ पे चोरी करूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा. So that is the way how we regulate our individual behavior. But then this is just an example of a technology, but we'll see in the coming slides that how what mainly I'll be focusing on. Next is to check cultural maladjustment. Cultural maladjustment, mal का मतलब ही नेगेटिव होता है. एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट ना कर पाना. कौन सी चीज के लिए? कल्चरल चीज के लिए एडजस्टमेंट ना कर पाना. तो उसको मतलब एडजस्ट करने के लिए हमारा जो कल्चर है, सपोज वी आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो इंडियन सोसाइटी हैज वास्ट कल्चर एंड वेरी रिच कल्चर. तो उसको मतलब बनाए रखने के लिए वी नीड ए कंट्रोलिंग सिस्टम. दैट इज देयर कम्स द नीड ऑफ सोशल कंट्रोल एंड टू प्रोवाइड सोशल सैंक्शन. सो सैंक्शन का मतलब ही है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मीन्स आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा. फॉर दैट रीजन वी नीड सोशल कंट्रोल कि दिस डिवाइस विल बी सेइंग दैट यू हैव टू डू समथिंग गुड ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, और आपको वो भी पता चलेगा कि इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट. सो योर एक्टिविटीज विल बी कंट्रोल्ड इन दिस वे. Then last but not the least, I'm not going with so many topics right now. The last one is to establish social unity. Very important one is that, like if you talk of Indian society, basically first I'll be taking a part of family. So if you talk of family, that how it is united, आप हमेशा देखोगे कि एक head somewhere, whatever it is, whether it's a patriarchal society, whether it is a matriarchal society, a head will be there who will be controlling the whole society, whole family and making them united. वो family अगर वो head अगर control नहीं करता है, then you cannot have unity in your family. इसलिए आप देखेंगे कि nowadays like family is losing control. That's why unity भी break होता जा रहा है. So like we had joint family and now we are having maximum we are having nuclear family. Again talking of Indian society as a whole, that how it is having a unity. So if you talk of basically secularism, which is a very important part of constitution, if we talk of secularism, in India we have multi-cultures, multi-language, multi-religion, means various of multis are there, which is innumerable of multis are there. तो उसको बजाय रखने के लिए, यूनाइट करके रखने के लिए क्या जरूरी है? सोशल कंट्रोल. नहीं तो इंडिया जैसे मल्टी नेचर मीन्स मल्टी एवरीथिंग ऑफ मल्टी कंट्री with so many of multis, so it's very difficult to have social control. अगर secularism नहीं रहता, and if we were not socialized from the beginning with the term secularism, according to my opinion, I don't think that unity would be prevailing in India. So the term secularism has led us, and the socialization through which we are brought up has led us to deal with these multi things. And that's why India is called as, country of unity in diversity. Then there is a topic called types of social control. In this types of social control, we have two types.
formal social control and informal social control. I'll be just dealing with the formal social control because informal is not in this topic. So in this formal social control, you have seen here comes the main thing, that is law. तो इस लॉ को लाने के लिए मैंने बाकी का पूरा जो थिंग है, talking about social contract, social control, I have used those things in sociological part and brought it to the main part, that is law. I try to relate it actually, and in this you will be seeing that custom and model code is given. So ये जो custom और moral code, these are basically termed as informal social control में ये लोग पढ़ते हैं, but यहाँ पे आप सोचेंगे कि क्यों लाए, because if you talk of law, then law का जो sources है, means how this law came up. If you go to the history of how the law came up, then you will find it has taken the sources from our customs, from our moral codes, because earlier to law आने से पहले यही सब होते थे, means this informal social control devices were there to control us, because law was not there at that time. So इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए law actually बना है. Now, as I said, that I'll be discussing some points of fully sociological, and that is, but that is based on law, of course. So, one of the very founder of sociology, Emil Durkheim, he was a very classical sociologist, a German sociologist. So, he talked about two types of society, mechanical and organic. So, in mechanical, here it's given mechanical solidarity and organic solidarity, but before that I'll like to discuss on mechanical society and organic society. तो उन्होंने बोला है कि mechanical society is a society which used to be there in primitive days. So पहले के ज़माने में, या फिर पहले के ज़माने में जो society बना करता था, he was talking of that as mechanical society. Mechanical उन्होंने इसलिए term दिया क्योंकि ये मतलब तब लोग मतलब machine जैसे सेम चीज प्रोड्यूस करता है, वैसे ही तब के लोग मतलब same thoughts प्रोड्यूस करते थे, same type of feelings and all these things, means homogeneity was there, similarity was there, like a machine. So he said that it was a mechanical society. And organic society is the modern society which we are right now in. And talking of solidarity, solidarity का मतलब है unity, कि एक्चुअली उन्होंने लॉ को स्टडी किया है इन दोनों सोसाइटी में और कंपेयर किया है कि कैसा लॉ हुआ करता था पहले सोसाइटी में और अभी के सोसाइटी में. सो अर्लियर देयर वाज रिप्रेसिव लॉ, इन primitive time it was repressive law. So repressive law unity बनाया करता था according to Durkheim, means after the study he has done or the research he has done. He said this repressive law was basically based on moral things. As I said, law आने से पहले moral customs ये सब चीजें ही मतलब regulate करता था, social control करता था लोगों को बांध के रखने के लिए. So the thing is, he talked about that the moral things को ही मतलब ज़्यादा importance दिया जाता था. And here he talked about punishment. So वहाँ पे punishment कैसे तरीके का होता था, means what type of punishments were given during these primitive periods. He said that कोई भी कुछ भी offense करे, या ये छोटा हो या बड़ा हो, means कुछ भी offense हो, there was a very severe punishment. You cannot means say sorry for your offenses which you have done. The society will not accept that. That type of punishments and severe punishments were given on that. जैसे कि कुछ किया तो आय निकाल लेना या फिर दांत खींच के निकाल देना. सो दिस वे द थिंग्स वेरी सिवियर, मतलब जिंदा तो आपको रखेंगे लेकिन आपका एक एक ऑर्गन निकाल के रख देंगे. एंड यू विल बी थिंकिंग दैट व्हाई दैट वाज डन. एक्चुअली that was to set an example for the other members of the society कि आप next time ऐसे crime या offense कभी नहीं करेंगे. You will not commit that type of offenses or crimes in your coming days. Because that means they used to think that was the way how they can have social control and unite the peoples. कोई भी एक मतलब
suppose at that time if you have rajas or something or whoever is ruling there, आप सोचेंगे नहीं कि उसके बारे में उसने कुछ गलती भी किया, गलत भी बोल रहा है, you will not even have the courage to say that something wrong the authority is doing, like that. इसलिए ऐसा punishment दिया जाता है. Here I would like to refer to two of the films which came. If you see, you can get the ideas that how punishments were given at that period. Like a film came up, a very famous film which came up as Mohenjo-daro, and another film that is Jodha Akbar, where उन्होंने दिखाया है कि punishment उस period में कैसा दिया जाता है. If you go through the films, you can have a visualization कि same में ऐसा punishment दिया जाता है. In Jodha Akbar, like Akbar used to give the punishments like alive. किसी को जिंदा, मतलब अगर कुछ ऑफेंस किया तो उसको जिंदा, मतलब वॉल के अंदर उसको मतलब वॉलिंग किया दिया जा सकता था, मतलब मीन्स he may die in that area. So in Mohenjo-daro also like this of means पूरा सोसाइटी के सामने, पूरा विलेज के सामने उसको alive रख के आइस निकाला जा सकता, मतलब जाता था. So these were the type of punishments which were given at that period. Now coming to the modern part, that is organic solidarity, कि अभी के जमाने में यूनिटी कैसे रखा जाता है. तो उसको दुर्खीम ने टर्म दिया है रेस्ट्रिक्टिव लॉ, जिसमें कि आप अगर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, देन यू हैव टू रिपे फॉर इट. आपको उसके लिए कुछ मतलब देना, भरपाई करना पड़ेगा. यू कैन से भरपाई करना पड़ेगा. कुछ भी आपने हार्म किया है उसके लिए आपको भरपाई करना है. एंड इवन नाउअडेज वी हैव imprisonment and various punishments by various laws which are assigned for it. That is presently which we are having, that is legal law, that is actually basically talking of restrictive law, and this organic solidarity is about. Coming to another sociologist, Max Weber, he is also a very classical sociologist. He has written many things about legal thought, and he himself was a lawyer at first, and then he became a sociologist. So from his studies of laws, and he had done lots of research in various countries also actually, what is that? He has given 3 types of authority. That is legitimate authority. He basically talks of legitimate authority. Legitimate का मतलब ही है कि law means legal authority. Authority मतलब power. So legal power कैसे था? मतलब during the whole process he has discussed about it, where he has talked of traditional authority. First one is traditional authority. If it is visible, then you can see that there is a picture of a king. So ये राजा जो था, मतलब जो भी राजा हो, ये रानी हो, whatever, they are the examples of traditional authority. कि कैसे मतलब सेम हेरिडिटरी वो अथॉरिटी चला जाता जाएगा, कि कोई भी वहां पे इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, only of that family which are ruling. So that will be continuing, and no other can involve in that. कोई भी वहां पे कुछ भी नहीं बोल सकता. They have the full power and authority there. Then comes the charismatic authority. So in charismatic authority, you can see the picture of Mother Teresa. There are various other pictures. You can talk of Jesus, you can talk of Swami Vivekananda, and many others. So by the term charismatic authority itself means charisma. Charisma means chamatkar. So something means extraordinary. In his words, in Max Weber's words, it's extraordinary. So extraordinary जिस आदमी में रहेगा, so he or she will have that authority, means उसके अंदर वो power आ जाएगा. Means like if we talk of Mother Teresa, then he was a very noble person. She has done various what is that, noble taxes, social services, and because of all this she became very much famous. People were dead followers of her, you can say.
So in that way she gained authority. उसका एक अलग ही power आ गया है, means which was not imposed, but everyone used to follow almost whatever the noble deeds she used to talk of. Now coming to the last one, that is rational legal authority. So rational legal authority is the present one, which we are dealing right now. But the term rational means reason. कुछ reasoning होता है, and then we go with the authority. कि हम लोग मतलब ऐसे ही मतलब बिलीव नहीं करते, but we think that should we go with the authority or not. With that this rationality comes, and with that is attached legal authority. Legal means written rules होते हैं या फिर rules and regulations होते हैं जिसको मानते हुए ये authority आया है. Means people's follow this authority because of certain rules and regulations which we have in our legal system. Here example I have cited about our Prime Minister Narendra Modi. time আছে ওটা টাইমের বাদে লইনা খুশলা একদম So talking of Narendra Modi, why I have quoted him in Rational Legal Authority, the reason is that being a Prime Minister, he has to go through various processes, written procedures, rules and regulations he have to follow to come to this position. That's why वो actually charismatic में डाला जा सकता था, because he has something extraordinary in him. जहाँ पे please moderator, please check that someone is unmuted. Sorry, please mute the person. Regina, please unmute yourself. I text her, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. You can carry on, ma'am. Thank you. Talking about this Modi, if we actually can put him to charismatic authority, but the thing is that he is not only charisma or extraordinary. That's why I have not kept him in charismatic authority, because he has gone through the processes which are required to enter this bureaucratic form, which mainly Max Weber has talked of, where rules and regulations are there, written rules and regulations are there, and legally you are authorized to go with those formalities. So Modi has gone through, not only Modi, there are various others who have gone through the processes and then come to this authority. So that is a form of rational legal authority. Then coming to my main focus, that is law as an instrument of social change. So now I actually wanted to relate it, that which I have talked about social control. See how law is an instrument, what is that? Sorry, an important agency of social control. क्योंकि हम अगर formal control के बारे में बोल रहे हैं, so law is playing a great role in controlling the society. So law saves precious and good concepts of society. Law जो हमारा पुरानी चीजें है, we have seen the need of social control. वहाँ पे देखा है कि old चीजों को भी preserve करके रखने के लिए we have law, and also not only the what is that? Not only the precious things, but even the concepts. The concepts of our society, the good concepts, not talking of bad concepts. Bad concepts are abolished by law, we'll see in the coming slides, and good concepts are tried to be restored through the means of law. Then even it helps in curbing the exploitation of the people. कि जो लोग misuse कर रहे हैं पावर को मिसयूज करके लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्सप्लॉइट मीन्स मिसयूजिंग द पीपल्स इन वेरियस वेज, बहुत ज्यादा उनको काम करवाना, मारना, पीटना और वेरियस वायलेंसेस एंड ऑल दिस थिंग्स. तो ये सबको भी कर्व मतलब खत्म करने के लिए लॉ बना है. As I have taken the topic of law and social change, so I'll be talking something on social change. As we know that social change is nothing but it's an alteration of society.
चेंज तो बहुत तरीके का हो सकता है, बट एज वी आर टॉकिंग ऑफ सोशल चेंज, दैट मीन्स व्हाट, हम सोसाइटी के बारे में ही बोलेंगे, वेयर देयर विल बी चेंजेस, ऑल्टरेशन, मतलब कैसे चेंज आता है सोसाइटी में, एंड इट टॉक्स अबाउट सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज एंड बिलीव्स. सो जैसे कि हम अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रक्चर की, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर इंडियन मैप, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है. व्हेन यू ड्रॉ इन जियोग्राफी, वी यूज्ड टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया. इट वाज कंपल्सरी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, आई गेस. सो वी नो दैट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, कैसे ड्रॉ करना चाहिए मैप को. तो वो स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, जो पहले वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखें और अभी का जो स्ट्रक्चर देखें, यू विल फाइंड चेंजेस देयर. दैट इज, जहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पे हमारा मैप का भी स्ट्रक्चर अलग था. और अभी अगर हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड, द सेपरेशंस व्हिच केम, उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आया है. सिमिलरली इफ वी कंपेयर विद आवर सोसाइटी, तो वहाँ पे हम लोग फैमिली में चेंजेस देख सकते हैं, मैरिज सिस्टम में चेंजेस देख सकते हैं. सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जहाँ पे चेंजेस आते हैं और आ रहे हैं. देन along with that our values and beliefs, जब फैमिली में चेंज होता है, along with that obviously the values are changing, our belief system, हम क्यों माने ये चीज, and all this are coming out. हम क्वेश्चंस करते हैं अपने एल्डर्स को जो पहले नहीं हुआ करता था. So in this way our values and beliefs are also changing. And with this all changes comes the change in economic, political and social dimensions also undergo modification. तो यही सब changes को रहते हुए क्या होता है कि इकोनॉमिक में भी चेंज आता है, इकोनॉमिक सिस्टम में हमारा चेंज आता है, पॉलिटिकल में, एंड ऑब्वियसली सोशल में चेंज आ ही जाता है. अभी जब चेंज आ गया, सो टू क्रीप विद दिस न्यू रिक्वायरमेंट्स जो सोसाइटी में आया है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो न्यू रिक्वायरमेंट्स आए हैं, उसमें क्या हो रहा है कि हमें एक सर्विसेबल लीगल सिस्टम चाहिए. सर्विसेबल लीगल सिस्टम जो कि हमारा न्यू सिचुएशंस को सूट कर सके, which is suitable for our new situations. क्योंकि पहले जो सिचुएशन था और अभी का जो सिचुएशन है वो तो दोनों सेम नहीं है. So we cannot go with the same legal system जो पहले था. Suppose if it was. So अगर नहीं है, so you have to implement a new legal system to suit the new situation. Then coming to the part that, so law has to undergo a progressive change if it is to subserve the needs of the society which it seeks to govern. तो अगर लॉ, मतलब लॉ एक्चुअली कैसा होना चाहिए, इट शुड बी प्रोग्रेसिव चेंज. प्रोग्रेस का मतलब ही है a good change. Okay, चेंज बहुत तरीके का होता है, as I said, it may be a good change, it may be a bad change. लेकिन हम जब भी प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, so it should be a very good, means the law should come for a good change. और वो क्या होना चाहिए, it should serve the needs of the society. तो ही लॉ गवर्न कर पाएगा. In static societies, law can be used as a powerful instrument of social change. Static society, static का मतलब है जहाँ सोसाइटी ठहर गया है, मीन्स इधर उधर नहीं हो रहा है, इट्स स्टेबल. सो उस सोसाइटी में, जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ दिस व्हाट इज दैट ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज या फिर कंजर्वेटिव सोसाइटी जो चेंज होना ही नहीं चाहते. So in that ground, we can take the help of law, or actually law will become a very powerful instrument जहाँ पे इस societies को change किया जा सकता है. British initiated it, and the demands of the modern age have rendered it indispensable. So British ने law को initiate किया है कि after the coming of Britishers only law has came up. And the demands of the modern age, आज के ज़माने में जो demands है वो क्या हो रहा है, और ज़्यादा मतलब necessitate कर रहा है कि आप लॉ को लाओ, लॉ को रखो, ताकि वो change ला सके हमारे society में. In fact, legislation has come to be accepted as the legitimate way to exercise social control and sustain the social structure. तो क्या बोला है कि legislation जो है कि
मतलब लेजिस्लेशन में क्या किया है, लेजिस्लेशन को एक्चुअली माना जाता है कि दे आर द एक्चुअल वे, दे आर गिवन द लीगल अथॉरिटी यू कैन से टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल, कि सोशल कंट्रोल करने के लिए पहले में जैसे होता था फैमिली, रिलीजन, कस्टम्स, मॉरल कोड्स, ये सब हुआ करता था, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं था। लेकिन अभी माना गया हो सोसाइटी इज going with the point that legislation is the only way through which the legitimacy will be there to control or exercise social control and sustain the social structure. जो भी हमारा social structure है उसको बजाय रखने के लिए legislation एक very important role play करेगा, and that is a means he is having a legitimate authority with it. Now, legislation makes the law which is intended to be not merely an agency of social control but also of social change. तो legislature जो है वो जो law बनाते हैं, so they have, ऐसा नहीं कि law बना दिया तो उसको सिर्फ social control ही करता जाएगा, वो सिर्फ एक agent बन के रह जाएगा social control के लिए, लेकिन उसके साथ साथ social change भी उनको लाना पड़ेगा. And it is expected to bring about social change by influencing behavior, beliefs and values. तो ये social change कैसे लाएगा? अगर हमारा behavior में कुछ change आया, हमारा belief system में कुछ change आया, हमारा values में कुछ change आया, then only a social change is expected. To cause change, a law should be supported by the society. Very nicely said that लॉ तब भी सक्सेसफुल रहेगा और यू कैन से a change will come जब सोसाइटी के मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे. Now, Constitution became the vehicle of change, providing space for upliftment of disadvantaged society. तो Constitution क्या हुआ? Constitution एक vehicle के जैसा आया जो change कराने में help करता गया. बेसिकली किसको चेंज कराने में? द डिसएडवांटेज सोसाइटी, क्योंकि डिसएडवांटेज हमेशा क्या बोलते हैं उसको इग्नोर करता जा रहा था लोग. सो टू मेक देम, टू अपलिफ्ट देम, ऊपर लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक व्हीकल बन के आया है. देन आवर प्रीएम्बल इज ए टेस्टिमनी ऑफ द सेम. सो हमारा प्रीएम्बल क्या है? ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेटमेंट्स है हमारा प्रीएम्बल दे रहा है. And Constitution safeguards rights of citizens, especially the vulnerable group. Constitution ऐसा नहीं है कि बाकी का rights को safeguard नहीं कर रहा है. It's safeguarding each and every citizens, but especially a special focus is given on vulnerable group because always they have been discriminated, they have been in a disadvantaged position. So that's why they are given much priority, and then of course the other parts are also given, or other peoples are also given the safeguards of rights. A number of social legislations were made in India both before and after independence with a view to bring about social change. तो social legislations जो है बहुत सारे आए हैं, independence से पहले भी, independence के बाद में भी. Some of these could bring success, while others still remain as dead letters. तो ये जो सोशल लेजिस्लेशंस आए हैं, इतने सारे सोशल लेजिस्लेशंस आए हैं, उनमें से कुछ तो बहुत सक्सेसफुल हुए चेंज लाने में या फिर अपलिफ्ट करने में, लेकिन कुछ नाकामयाब रहे और वो सिर्फ एक डेड लेटर्स के जैसा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो इट इज देयर एज अ लॉ और एज एन एक्ट और व्हाटएवर इट इज देयर, बट it has just remained as a dead letters because it could not bring any change in the society. Now, a very interesting thing which comes is, can law bring social change in India? It comes to my mind. Now, in some cases, yes. If you take the example of the Prevention of Sati Act 1829, which came up in 1829, this was by Raja Ram Mohan Roy and William Perry. Raja Ram Mohan Roy, I think all of us know about Raja Ram Mohan Roy. He was a very famous social reformer, और उन्हीं के कारण ये सती सिस्टम एबोलिश हुआ, and with the help of William Carey also.
because William Carey Britishers था उस time पे, but he was very well helping Raja Ram Mohan Roy and taking his talks to the lords at that time. Basically, Lord William Bentinck was there, who has then initiated the Prevention of Sati Act 1829. And with this initiation, abolition of inhuman practice of sati has been there. And we can see this change actually because it's rarest of the rare that we find that sati system आज के दिन में देखा जाता है. So you can say that yes, really law has bring a vast change. Now, coming to the right to education. Every one of us know it's very easy part of which is known, you can say very famous, which is known to everyone, right to education. So here in the Article 21A 2002 of Directive Principles of State Policy, it has been stated that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may determine by law. तो law ऐसा बनाया गया है कि 6 से 14 years के बीच में जो बच्चे होंगे उनको free and compulsory education दिया जाएगा. And this was again amended in 2009 and it came to effect in 2010. I would like to state something in societal parts regarding this act. That one famous person, female you can say, she was actually the first female teacher of India, Savitri Bai Phule. She started teaching in a school only for girls. That school was only for girls. There is a reason behind why it was only for girls. Because education to girl was a taboo. Taboo मतलब अच्छा नहीं है, कुछ society के लिए अच्छा नहीं होगा, not good for society. So but what happened? This movement gradually became the source of law. ये जो movement आया है, means सावित्री बाई फुले के वजह से जो एक movement आया कि girls को पढ़ाना चाहिए, वो क्या हो गया कि law का एक source बन गया. कैसे law का source बन गया कि तब उनको लगा कि only law that time was also means aware that yes, girls should also be given the right to education, and with that that came into reference with Article 21, जबकि girls को भी मतलब पढ़ने का full authority and right दिया गया, and it has become a fundamental right for all children along with the girls also. Now here I would like to stop for a while and just like to interact, or you can say just talk a while with the students if they could guess the personality given here. Hello? Students? If they can, I don't know, I will be busy, means I can see those messages or not. Yes, Masood has replied, ma'am. It's Ramnath Kovind. Okay, good. And second one, anyone? Students reply. If not, I'll proceed. Ma'am, please proceed. No one is replying. Yes, yes, ma'am. Actually, that is the reason why I kept it, to just check with how much our students are, means how whether they are able to identify the personalities or not, because these are very famous personalities. So first one is Ramnath Kovind. He is the present President of India. The second one is K.R. Narayan. He was the former President of India. And the third one is Meera Kumar. Now, I'll be talking something on these personalities. Why a question may come, why I have kept these personalities.
Now, we can see that how changes law has brought. If you study the life history of these persons, you will find how law has changed their life. Like our present president, he is, the second Dalit president of India. Dalit president of India. And the second picture which is there, it is K.R. Narayan, who was the 10th president and 9th vice president of India. वो क्या था, 10th president था और 9th vice president इंडिया के रह चुके हैं, and he was the first Dalit president in India. And Meera Kumari, she is the first speaker of female speaker of Lok Sabha. So different personalities coming from different backgrounds. They they are all from Dalit background. And if you study their biography, you will find that it's very heart touching that how they have struggled to come to this position. It's not that ऐसे ही वो लोग बिना work किए वो लोग आगे. And let me say you that from this, Meera Kumari is also a lawyer, and even Ramnath Govind was also a lawyer. And Ramnath Govind was also the former governor of Bihar. And Ramnath Govind, who is the president, he has also practiced in Delhi High Court and Supreme Court of India till 1993. और उसके बाद ही वो पार्लियामेंट में एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा वो आए हैं. गोविंद का अगर आप केस देखते हैं, सो ही वाज बोर्न इन ए वेरी पुअर फैमिली. मतलब उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसके मम्मी 5 years में उसका डेथ हो गया बिकॉज द केस वाज दैट कि उस विलेज में आग लगा था, एंड ड्यू टू दैट हिज मदर वाज आल्सो अफेक्टेड विद दैट फायर एंड गॉट बर्न. एंड आफ्टर दैट इवन ही हैड टू वर्क. मतलब उसको चल के जाना पड़ता था 8 kilometers जैसा अपने स्टडी इंस्टीट्यूशंस में. सो इन दिस वे मीन्स इट्स वेरी टचिंग कि कैसे मतलब एक मिट्टी के घर से कैसे वो एक प्रेसिडेंशियल और राष्ट्र भवन में वो अपना एंट्री लिया. इट्स वेरी टचिंग. यू कैन गो थ्रू द histories of these personalities. Then the case lies with K.R. Narayan too, कि वो भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, एंड दलित फैमिली ऑफ कोर्स. ही वाज बेसिकली ए जर्नलिस्ट और उन्होंने द फेमस द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया में वर्क किया है. और उनको मतलब ऐसा था कि पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था. दैट एट दैट पीरियड जो छोटा सा एक अमाउंट होता था वो भी उसके पास नहीं था. एंड देन ही वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही गॉट स्कॉलरशिप्स, एंड देन ही वाज सेंट टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. And even he was a teacher. He used to teach in Delhi School of Economics and also a vice chancellor of JNU. So and he actually, I wanted to quote him that generally in our political science we always say that president is a executive member, but he himself used to say that he is a working president, not an executive member. So he was not just for namesake. Actually, he used to work. He used to work for the Dalit rights. He used to work for the tribes. He used to work for the status of women. He has done a lot of social services in this way. Even Meera Kumari also has done various social services.
And with this, I would like to say that reservation policies have made an incredible change in the society. We can see innumerous examples, say it untouchables, tribes, या कुछ भी आप बोल लो, who were the unprivileged section got an ample number of opportunities and were uplifted to the mainstream India. जो constitution के part में मैंने as a vehicle मैंने mention किया था कि कैसे उनका upliftment हुआ है from means how their journey from that poorest section to a prestigious section came up, that all was possible because of law. Now, positive sides बहुत देख लिए. Now we need to, as a sociologist, we need to talk of the negative sides also. Not negative, I'll say, means I will say that something which actually in India अभी तक मतलब changes लाने में मतलब बहुत time लगेगा, you can say. I'm not saying negative, but it will take lot more times to have changes in certain sections of our society or certain parts of or issues of our society. Where I'm taking a what is that very what is that scenario of female feticide and female infanticide. Female feticide is something which is जो मम्मी के पेट में जब हम रहते हैं उस टाइम में जो मार दिया जाता है, इट्स फीमेल का मतलब ये गर्ल चाइल्ड है. सो गर्ल को जो मतलब विद इन द वोम्ब मार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल फ्यूटिसाइड. अनदर इज फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि जन्म के बाद इन्फेंट मीन्स आप बहुत छोटे हैं उस टाइम में जब आपको मार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड. So for this for this social evils also, there came laws like the Prenatal Diagnostic Test Act, जो कि 1994 मीन्स बहुत पहले के टाइम में ये आया हुआ है. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट, मतलब प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले का जो टेस्टिंग होता है, एंड दैट इज एक्चुअली डन थ्रू द टेक्नोलॉजीज व्हिच वी नाउअडेज कॉल इट एज अल्ट्रासाउंड. So this was actually discovered in European countries, and now it has come to India. वहाँ पे discover हुआ था बहुत अच्छे काम के लिए, but it's very sad to say in India people are misusing the technologies, and by determining or detecting the sex, they are killing the child. Basically, it means talking of the girl child. So they are misusing the technology. लेकिन एक्ट तो आया है 1994 में. Now this act was again amended in preconception and prenatal diagnostic techniques, regulation and prevention of misuse in 2004. ये भी आया है ताकि मतलब ये अमेंड होके आया है, सेम चीज को और अमेंड करके लाया है ताकि कोई भी इस चीज को प्रैक्टिस करे, मीन्स प्रीनेटल सेक्स स्क्रीनिंग करे या फिर देखे कि क्या है अंदर, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, उसके लिए क्या पनिशमेंट्स दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. यू विल फाइंड इफ यू गो टू any hospitals, you will find that एक बड़ा सा पोस्टर लगा रहता है डॉक्टर के चैम्बर के बाहर कि sex determination is illegal and all this and this. But then means कितना successful है, that is a question mark. Coming to a report of UNFA रिपोर्ट, जहाँ पे मतलब ग्लोबली एक स्टडी किया गया है, इन दैट सेज दैट 142 मिलियन गर्ल्स वेंट मिसिंग ग्लोबली. मतलब 142 मिलियन गर्ल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेक्स सिलेक्शन के वजह से ही क्या हो गया, वो मिसिंग मतलब अभी पता नहीं, उसको मार दिया गया, फेंक दिया गया, नाले में डाल दिया गया, गार्बेज में फेंक दिया गया, मीन्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप, दैट इज मीन्स दिस मेनी ऑफ गर्ल्स आर मिसिंग. नाउ ये चीज या तो प्रीनेटल में हुआ या फिर पोस्टनेटल, मीन्स फीमेल फ्यूटिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड, दोनों को मिला के हो सकता है. नाउ फ्रॉम दिस होल सिनेरियो आई एम टेकिंग द सिनेरियो ऑफ इंडिया, जहाँ पे 4,60,000 गर्ल्स वेंट मिसिंग. दो आई डोंट हैव द
present scenario, because I searched a lot, but I have not found that present data, but I found it from 2013 to 17 का जो data है given by UNFPA report. So वहाँ पे देखा गया है 4,60,000 girls went missing. It's not a matter of joke actually. जो इतना act आया है, इतना laws आया है, still see the condition of girls what is happening. So यहाँ पे भी और एक picture आपको मिलेगा कि जहाँ पे India दिया हुआ है and the girl child is there and it's missing. यहाँ पे दिया है कि एक दिन में 1095 sex selective abortions होता है. Abortion is legalized, but after selecting, that abortion is illegal. And then एक year में कितना होता है? 4 lakh sex selection abortions होता है. So this is a US Census Bureau report. So यहाँ पे I like to quote a term जो बहुत पहले का आया है, एक book by very famous economist Amartya Sen. He has written a book Missing Women. So उस टाइम में उस बुक में उन्होंने ये सब चीजों के ही बारे में पहले ही दिया हुआ है कि क्या होता है इंडिया में, how the girl childs get missing. Now a very famous case, that is of Sabarimala case, which says, means there were this case came up because women from the age group of 10 to 50 years were legally banned to enter the temple, जो कि एक illegal और unconstitutional था. तो उसके लिए Indian Young Lawyers Association ने एक केस जाहिर किया. That was the case Indian Young Lawyer Association versus the state of Kerala के बीच में ये हुआ था. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगलाइज किया in the year 2018. But the thing is that if you look into the news of today's date also, you will find अभी तो कोविड चल रहा है, उससे पहले का means after the legalizing of Supreme Court also, if you see the cases, you will find that still now, means I have seen a case of that is 16th July 2019. Okay, उस टाइम में भी देखा गया है कि 10 वोमेन, मतलब बहुत करेजियसली, जो कि लॉ में दिया हुआ है लीगल, वोमेन कैन एंटर दैट, लेकिन उसमें भी बहुत करेज लगता है उसमें घुसने के लिए, इस टेम्पल में घुसने के लिए. जो जब वो लोग घुसने गए, देन देयर वाज वेरियस मींस उनको मतलब घुसने नहीं दिया. After the legalizing of the legalized by the Supreme Court also, they were banned to enter the temple. Now, one more very heinous crime which is going on in India, but I can say, before going to the topic, I can say that being in Northeast India, actually we are in a very advantageous position because we have not gone through this type of things which are happening in North India. Basically, I'll prefer it to North India, and even it is found in South India also, but too much in North India. Now, honor killing, इसी के बारे में मैं बोल रही थी. So, honor killing is the murder of a member of a family due to the person's belief that the victim has brought shame or dishonor upon the family or has violated the principles of a community or a religion with the honor culture. तो यह ऑनर किलिंग क्या है कि एक मर्डर होता है फैमिली मेंबर्स को, मतलब कौन मारता है, ये एक मतलब बहुत जानने की चीज है. कौन मारता है? फैमिली मेंबर खुद मारते हैं उसके बेटी बेटा, दिस थिंग्स. क्यों? क्योंकि वो लोग ashamed है, क्योंकि उन्होंने जो किया है, सपोज द मेंबर ऑफ द फैमिली, वेदर इट इज ए गर्ल और ए बॉय, जो भी किया है, दैट ब्रिंग्स शेम टू देयर फैमिली और डिसऑनर. ऑनर मतलब रेस्पेक्ट को खत्म कर देता है, वो लोग सोचते हैं, वो लोग मानते हैं. तो उस रेस्पेक्ट को फिर से बजाय रखने के लिए देयर कम्स द ट्रेंड ऑफ ऑनर किलिंग, जो कि बहुत सारे कम्युनिटीज और रिलीजन्स में फॉलो किया जाता है, ताकि उस ऑनर कल्चर को वो लोग बनाए रखे. एंड दैट इज द प्राउडनेस फॉर देम बाय किलिंग देयर ओन मेंबर्स.
इसको बेस करते हुए एक्चुअली वेरियस फिल्म्स केम अप इन बॉलीवुड. You can एक का तो मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया ही हुआ है, that is खाप. खाप came up in what is that a film which is came 2011 I guess. खाप film came up जो इतना पॉपुलर तो नहीं हो पाया, but it was showing the whole scenario, whole picture of this honor killing. और NH10 जो एक फिल्म व्हाट इज अनुष्का शर्मा का एक फिल्म है NH10, जहाँ पे ऑनर किलिंग के बारे में वहाँ पे भी बोला गया है. अगेन धड़क, वेरी फेमस वन, वेरी फेमस, जहाँ पे दिस वन श्रीदेवी के बेटी ने जो फिल्म किया था धड़क. इन दैट ऑल्सो if you see the film at the end, it's that the father and the brother of the girl killed both the girl and their son-in-law. So there are various films. Again, a very famous Marathi film, that is Shairat. So वो बहुत फेमस हुआ था, बहुत अवार्ड मिला उनको, नेशनल अवार्ड मिला, बिकॉज द फिल्म इज डिपिक्टेड द ऑनर किलिंग. एंड इवन एक मतलब ये सब इंडिया का था. एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिर्फ इंडिया में ही ऑनर किलिंग होता है, it's all over in the world because of various reasons might be, but they have their own reasons for saving their honor and killing the peoples. एक पाकिस्तान का मैं फिल्म ले रही हूँ क्योंकि वो एक बहुत मैंने 88 एकेडमिक अवार्ड्स उनको मिला है. that is A Girl in the River, The Price of Forgiveness. ये एक पाकिस्तानी बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है 2015 में, A Girl in the River, The Price of Forgiveness, which is based on these honor killings in Pakistan also. So if you like, you can go through this I've mentioned, that's why, because here I cannot cover many things. I have actually running short, I think so, of time. So, now, coming to another record given by National Crime Bureau record 2016 तक ही इसका record मिला है. I think they have not updated anymore. So वहाँ पे देखा गया है कि 2016 तक there were 288 honor killings reported in India. उसके साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि 288 was actually not enough. 288 से भी बहुत ज्यादा मतलब हुआ है, बट 288 तो सिर्फ रिकॉर्ड में आया है क्योंकि सम ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट आर डूइंग स्टडीज ऑन दिस, और जैसे तैसे स्पाई के जैसे वो लोग निकाल रहे हैं कि देयर आर सो मेनी केसेस व्हिच आर हिडन. मींस क्योंकि फैमिली मेंबर्स खुद उसको मारते हैं ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उसका एविडेंस मिला जाए. So it's very difficult. So there are various cases जो कि रिपोर्ट में ही आता नहीं है. But then taking the laws, it's not directly of honor killing, but it gives the penalties like IPC sections I have mentioned, 299 to 304, 307 to 308, 120A and B, 107 to 116, 34 and 35, and so many might be there. I'm not so much into law, but some of the things which I could found out is that these all are giving penalties or imprisonment because of these criminal conspiracies or killing which is going on in India. Now, here to I don't know again the students how much they will be interacting. So I actually had kept this slide also for an actually interaction, that if they could say that how by seeing the pictures, can you guess that what law I want to talk of? Students, please interact. Ma'am, Article 377, I think. Ma'am, I was expecting from students. It's not me, ma'am. It's Tuhina. Ma'am. Is it? Okay, okay. Then it's okay. Okay, good. That is the thing I wanted. So it's talking of Article 377, which has been abolished, and
legalization of LGBT community in India came up on 6 September 2018. लेकिन ये तो लीगलाइज हो गए हैं, बट अगर हम लोग फिर से सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग बोले कि इज इट रियली वर्किंग, means how much, to how extent. Suppose, okay, we'll take this discussion in our interactive session. I'll talk with that. Now, I will go to the next slide. We'll talk of this in the interactive session. Finally, I would like to conclude my session here by saying few words. Like, by and law, we see that law is shaped in order to achieve the goal of social, economic, political justice to the society. तो लॉ किस लिए शेप किया जाता है? ताकि हमें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमें जस्टिस मिले. In fact, interaction between law and society is indispensable. हम लोग लॉ एंड सोसाइटी का जो ये जर्नी है वो मतलब हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, मतलब एक ही साथ दोनों को चलना होगा. सोसाइटी कैन नॉट गो विदाउट लॉ एंड लॉ कैन नॉट इग्नोर सोसाइटी. सोसाइटी कभी भी लॉ के बिना चल नहीं सकता, बिकॉज फॉर वी सीन द नीड ऑफ लॉ. मीन्स जब मैंने वो स्लाइड तब नहीं दिया, लॉ डायरेक्ट नहीं मेंशन किया, नीड ऑफ सोशल कंट्रोल आई हैव गिवन बिकॉज आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड कि लॉ में मैं आऊं. तो अभी अगर आप उस नीड ऑफ सोशल कंट्रोल की जगह लॉ को बिठा दे तो आप देख सकते हैं कि लॉ कितना जरूरी होता है कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज के लिए लॉ जरूरी है. लेकिन और एक चीज इसके साथ साथ जाता है कि लॉ इग्नोर नहीं कर सकता सोसाइटी को, क्योंकि लॉ जिसके लिए बना है, जिस जस्टिस को देने, मतलब सोसाइटी को जो जस्टिस देने के लिए बना है, उसको कैसे लॉ इग्नोर करेगा? देन दैट मीन्स व्हाट, इट हैड टू गो विद द सोसाइटी. देयर इज अ सेइंग, लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल एंड विश ऑफ द सोसाइटी. मतलब ये एक बहुत अच्छा चीज है कि लॉ क्या है. लॉ देखने से हमें पता चलता है कि हमारा सोसाइटी का क्या नीड है, क्या विल है, क्या हम चाहते हैं. और हमें मतलब लॉ इज एक्चुअली द will and wish of society, you can say. Then it is interdependence. Law and society दोनों ही क्या है? इंटरडिपेंडेंस है, ताकि सोशल चेंज लाए. क्योंकि एक स्लाइड में मैंने दिया हुआ है, अगर दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, लॉ बन गया बट इट्स नॉट चेंजिंग द सोसाइटी, देन दैट विल बिकम ओनली एज डेड लेटर्स. तो वो कुछ काम के लिए नहीं आएगा सोसाइटी में. देयर आर सो मेनी लॉज, अनकाउंटेबल लॉज आर देयर, लेकिन हाउ मच आर कमिंग टू मीन्स हाउ मच आर इम्प्लीमेंटेड और हाउ मच आर एक्चुअली अफेक्टिंग द सोसाइटी और चेंजिंग द सोसाइटी. Dr. B.R. Ambedkar embedded in the Article 368 that any piece of the Constitution might be revised by embracing suitable strategy with the exception of obliterating the essential structure of the Constitution. तो अम्बेडकर ने जब वो he is called the father of Constitution, तो उन्होंने जब आर्टिकल 368 बनाया था तब भी उन्होंने बोला था कि अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करना है तो हमें सुइटेबल स्ट्रेटेजीज, मतलब आप उसको इनपुट कर सकते हैं, सुइटेबल स्ट्रेटेजीज जो कि सपोज उस टाइम के लिए एसेंशियल है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है. लेकिन एक बात रखा है कि एसेंशियल जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मीन्स द मेन इंपॉर्टेंट फंडा और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड. To conclude, it is submitted that law has to be proactive to bring about desirable change in the society and to perform its function to the best of its ability. तो लॉ को क्या बनना पड़ेगा? प्रोएक्टिव, मतलब एक्टिवनेस से भी और ज्यादा अगर वो बन सकते हैं, देन ओनली दैट कैन ब्रिंग ए डिजायरेबल चेंज इन द सोसाइटी. जो पहले भी मैंने बोला है कि प्रोग्रेसिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, एंड इन दैट वे it will be functioning very well, and law का भी abilities बाहर आएगा कि there will be no means like saying that हमारा law तो बेकार है, कुछ काम का नहीं है, या फिर कुछ changes तो ला ही नहीं सकता. So that things will not come when law itself will become proactive. Okay, with that I conclude my session.